Good morning, everyone. Welcome to zbit.com's live stream on the zbit.com app as well as on YouTube live streaming as well. I'm live now on both the platforms. My name is Karan, and I am here with a newer topic with me today. And of course, I am going to be trading as well. I am going to be looking at the latest news as well, and I am going to be looking at, I'm also going to tell you the latest, the most recent happenings in the world of cryptocurrency. Along with that, the crazy crypto fact of the day as well, right? I'm going to be here trading for the next 3 4 hours as well, right in front of you, and I'm going to be helping you make some trades. I'm going to be telling you about what's happening in the world of cryptocurrency, what's happening to bitcoin, what's happening to ethereum, क्या चल रहा है क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में। अगले 3 4 घंटे में हम डिस्कस करेंगे along with the most important thing, the topic of the day, right? That is going to be one particular coin that we are going to be closely looking at, monitoring, looking at its past as well as its background, its founders, all the things, and looking at where it stands today, where it has chances of progressing towards, or is there a bright future, is there a darker future, what are expectations from it, what is going to be its breakout phase, what does the future have in store for XRP. That is the coin that we are going to be looking at today. Yeah, 1.4777 is where right now XRP is currently at, and we are going to be looking at how it, whether it surges from here or whether it goes down from here, right? We are going to be closely monitoring how it has been behaving, what are the predictions in and around it, and how all the projections that are being made around XRP are adding up, whether they are adding up, whether they are not adding up. What are the wildest of wildest predictions around XRP? I've read a few. I'll keep sharing with you. How has its growth been? That is going to be the topic of the day. Whether it has outclassed BTC and Ethereum in terms of growth percentage in the last couple of months or so, or not. That is what we are going to be looking at. Along with that, मैं आज काफ़ी सारे ट्रेड्स भी करूँगा जो कि आप देख पाएंगे। आप अगर मेरे साथ zbit.com लाइव स्ट्रीम पे जुड़े रहेंगे अगले 3 4 घंटे तक, तो आप देख पाएंगे। I welcome you all to the live stream. I'll wait for a few more people to join in, and then I am going to be beginning with the topic of the day. Right? I hope you're all having a lovely day from wherever you are tuned in at, whether it is Dubai, whether it is, you know, uh, any part of the country, Brazil, any part of the world, I'm sorry, India, Brazil, Dubai, Singapore, Nigeria, South Africa, anywhere in the world, whether you're from Europe, Asia, anywhere. I am going to be closely monitoring Indonesia, right? Uh, I'll also wait for your comments on the zbit.com app, and I'm also going to be looking at how you all, whatever queries you have, what kind of trades are you making, what kind of expectations do you have for BTC as well. Because the price of BTC, as we all know, the market has been in a bearish state of mind. BTC currently is around the 67,000 mark, and it looks like at the moment the breakout and the resistance that it is in and around is, it's becoming tougher for it to breach the 70,000 barrier. It has done that in the recent past. It has gone and touched 70,000 and come back again, but again doing that would be asking way too much of BTC at the moment, perhaps, as that is what it's looking like. I'm not saying anything out of my emotional attachment, or keeping my emotions on the high. I'm just making predictions
And from the market point of view, from what I can see and what I can project, so we are at the bottom or we're not at the bottom is very difficult to say. Everybody has different kinds of opinions when a market is in a bullish state, or when a market is in it's in bearish state, right? So I do have my own projections, I do have my own predictions, but yeah, and that is what I've just told you about. It feels like the bottom is still very far away, according to me, and I feel like it might just go down below 60,000 as well, this market. So on that note, we are going to also be keeping track of BTC, but the main topic of the day and the main coin that we are going to be looking at is going to be XRP, right? We've looked at it, quite a lot of times. We keep monitoring, and its price keeps fluctuating as well, because that has been the case in the market since the last couple of days. Like you've already seen, it's been a roller coaster of a month, if you ask me, January and this mid of February. But uh, how do these coins eventually show signs of some kind of resurgence, and all these altcoins, how do they pick up from where they are to where they are supposed to be? That is something that is going to be really interesting to watch. In the next couple of days, we are going to be keeping a track of all these coins. In particular, today, I've taken up XRP. In the next couple of live sessions, I might take up other coins as well, alternate live sessions of mine, right? So on that note, I welcome all of you to the live stream. I'll be here for the next 3 4 hours. I hope you can stay with me throughout this live period, and I'm going to be keeping track of all these coins, in particular XRP today, and how it started, how it was founded, what is its use case in the world, how it can be adopted by banks in the next few years or so, and how its performance has kind of outclassed BTC and Ethereum as well. That we are going to see. What are the future predictions about XRP? That's what we are going to analyze and monitor and get in depth into, right? My name is Karan and I welcome you to the live stream. I hope you are also joined on my zbit.com live telegram page as well, because if you're not, kindly go ahead and join it. Right, I'm going to be waiting for a few more people. When they can join in, I will begin with the topic of the day. I'll wait for a few more minutes, and then we will eventually start with the topic of the day.
I welcome user 121599 to the live stream. It's a pleasure having you here all the way from India. बहुत बहुत स्वागत है ब्रदर आपका. आज का हमारा टॉपिक जो है इन पर्टिकुलर इज गोइंग टू बी XRP, राइट? एंड we are going to look at its breakout, its regulation, and what comes next. Basically, what has been its background, what is its use case, and what all projections are there. What is the future of XRP in the next couple of days, and how it is going to probably be the next big thing according to a few predictions that I've read about, right? That is the topic of the day. XRP in particular has had wild predictions when it comes to the market, and a lot of people see it as because of its use case, a very important coin in the cryptocurrency industry, in the cryptocurrency world. We are going to be dissecting it quite in depth, because we are going to look at what are the projections, what is its use case, whether whether banks will allow XRP to maximize their potential. That is what we are going to be looking at. I welcome all of you users who are just joining in today. The topic has been that of XRP, its breakout period, and what comes next of it in the next coming years or so. How is it performing as well? That is also something that we are going to be looking at. On that note, I'll also begin a few trades here. I do feel like BTC is going to touch 68,000 at least in the next couple of uh, maybe it'll just I'll just go short from here. So, yeah, so I do have my first trade open of the day, and that is obviously on BTC. It is currently at 67,924, 925 is my NT price, and I hope that it'll go downwards from here before it goes on to actually touch 68,000, right? I do hope that it eventually does touch 68,000, as well as 60,000, 69,000 as well, because with BTC the thing is that it is very much volatile, and it has a tendency of you know surprising you, if that's the right word, on days and on weekends, and whenever you're not having your attention in the market, at the market, how it's doing, how it's performing, it does have a tendency to surprise you. Will that be the case today? That we are going to have to check and see, because at the moment it does look like it's going to go and touch 68,000 US dollars. And on my live stream, I'll make sure that I keep tracking, monitoring BTC. Right. So XRP is obviously the topic of the day. We are going to be looking at how XRP is performing in the market. First of all, it is currently at, yeah, so it has indeed touched 68,000. And on that note, I probably feel like I've made a bad trade. Starting of the day hasn't been that good, I would say.
So BTC has climbed just above the 68,000 mark on uh, my live stream at the moment. And actually, I have been bearish, to be honest. And it does look like that bet isn't going to pay off as such, but we'll obviously wait for the next few minutes and see how our trades do actually. But in the meantime, we'll look at XRP related news. Now, this is the first sign that BTC losing 70,000 is a warning sign for further downside. Right, signs of good progress at XRP does look like it is going to touch 1.49 today, right? A small bet on XRP. Let's wait and see how actually that turns out to be. Standard Chartered cuts 2026 XRP price forecast from $8 to 2.80. Now that's a huge fall that Standard Chartered has actually huge move that Standard Chartered huge bank has made. Why has it lowered its price forecast? We'll read about it now, right? But that hasn't just been the case with XRP, it has been including BTC, including Ethereum, and obviously again XRP. Because the firm expects another leg down in the months ahead before stabilizing later in 2026. Weaker risk appetite and selling pressure from exchange traded funds could deepen losses across the industry. तो भाई इनके प्रोजेक्शंस जो थे पहले $2.80 तक के थे, सॉरी $8 तक के थे XRP को लेके ईयर एंड तक 2026 तक, पर अब इन्होंने उसको रिवाइज करके 2.80 कर दिया है। राइज देखो फिर भी है ना? अभी 1.8 के आसपास XRP चल रहा है, 1.4 के आसपास, पर यहां से भी 2.80 जाने के हैं फोरकास्ट। आप बेटर साइड देखो, ये प्रोजेक्शन है बाय द वे, इट डजंट नेसेसरीली हैव टू कम ट्रू। आई वेलकम यूजर 145060। तो भाई इस प्रोजेक्शन के हिसाब से तो बीटीसी भी इनके हिसाब से 50,000 के आसपास आ जाएगा, और उसके बाद फिर इवेंचुअली लॉन्गर टर्म में ये जो है वो रिकवरी लेगा। पर एक्सआरपी के साथ चीज ये है कि एक्सआरपी अभी थोड़े दिन पहले ऐसा लग रहा था कि इट माइट कम टूवर्ड्स $1, बट दैट हैजंट हैपेंड। एक्सआरपी इंस्टेड, जबकि सारे कॉइन्स नीचे गए थे, एक्सआरपी ने 1.4 1.3 मेंटेन करा हुआ था, अभी भी कर रहा है। and therefore projections are that it will eventually go up, although the sentiment actually is very much नाजुक बहुत है इस वक्त, फ्रेजाइल बना हुआ है बहुत।
and it has weakened since late 2025 rally. That is according to Victor Ulen Revaju, an analyst at CCN. Or longer term में ये might struggle to post a stronger breakout in the near term. That is what this article is talking in particular about. तो XRP को रिलेटेड जितनी भी प्रोजेक्शंस हैं, दे हैव बीन ऑन द ब्राइटर साइड ऑफ थिंग्स. हालांकि प्रॉब्लम ये ट्रेड खुला ही नहीं है, तो ये अच्छा है. आई लुक टू क्लोज दिस आउट. अच्छा, बाकी कॉइन्स कैसा कर रहे हैं परफॉर्म, एक बार हम ये भी देखेंगे. किस कॉइन में सबसे ज़्यादा चेंज आया है लास्ट के कुछ देर में. 4.16% तक चेंज आया है ENS में. 12% चेंज आया है SPX में. और मेरे ख्याल से यश ने इसका सिग्नल आप लोगों को दिया भी था. आई होप दैट काफ़ी लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया होगा. आई जस्ट हैव अ लुक एट this particular trade that was given out. Entry minus 0.073. Zero seven four five. एक बार एक सिग्नल भेज दूं बस. आई होप दैट you are also keeping track of the market.
I am certainly looking at the market and looking to send out a signal here for all of you people on my Telegram group. This is my Telegram group. It's by the name of zbit.com live with Karan. And I hope that all of you people are listening to my signals that I send out. I'm not been sending out signals every day, but I do. When I do send out, I hope that you all look at those signals and make a move eventually. I will actually send the graph as well for this. BTC meanwhile has come around the 68,000 mark. I welcome user 96952 to the live stream. We've been constantly tracking BTC, but it has crossed the 68,000 mark and is now probably maintaining that figure. It was somewhere around the 67,000, 6,800 mark in the last couple of minutes, last couple of hours, but it has come towards the 68,000 mark. Now, whether it will go towards the 69,000 mark and probably in the next few days touch the 70,000 mark and come back again, or will it go downwards from here itself? That is something that's very difficult to predict, but there could be a bullish run around the corner because we might have already hit the bottom when it comes to BTC. Obviously, there are predictions that BTC will go on a bullish run as we come to the close of 2026 this year itself. And वो हमें देखना पड़ेगा. I welcome user 181595 to the live stream as well. I've made a couple of trades as well. I'm keeping a constant track of them, and I hope that you can also make a few trades here and there and get some profits under your belt. XRP meanwhile is the coin that we are looking at today. And we are going to constantly track XRP, how its past has been, what are the projections, how is it doing today, what are the predictions that are there. ये देखो, XRP rich list update 2200 XRP now enough to enter top 10% of wallets.
ट्रेड दिए हैं सर जी, हाँ ट्रेड दिए हैं। अ, लेकिन ये कॉइन हमारे उस पे नहीं है, ये कॉइन दूसरे प्लेटफॉर्म पे है, तो आप वहाँ जाके ट्रेड ले सकते हो अंगद जी। मीनवाइल आज का हमारा टॉपिक जो है, आई वेलकम यूजर 104849 as well to the live stream, and I hope that you people have made some kind of deposit on zbit.com, and if you've not, kindly go ahead and do so. uh, I am going to track this. I welcome user 475963 to the live stream. आज हम इन पर्टिकुलर भाई देखने वाले हैं एक्सआरपी को लेके क्या फ्यूचर है, क्या मार्केट है, एक्सआरपी किस यूज केस सिनेरियो को पूरा करता है, क्यों ये लॉन्च हुआ था, क्या इसके पीछे मोटिव था, और फ्यूचर प्रोजेक्शंस कैसे हैं, अभी कैसे चल रहा है, मार्केट सेंटिमेंट क्या है, ब्रेकआउट फेज कब आएगा, ये सारी चीजें हम देखेंगे। हेलो हेलो हेलो। तो ये सब हम आज देखेंगे। सर कोई ट्रेड सेंड किए थे टेलीग्राम पे? हाँ जी हाँ जी, ट्रेड सेंड करा है, साइबर को लेके करा है। साइबर ऑल्दो इज नॉट ऑन आर जीबिट.com पे नहीं है, दूसरी किसी आप प्लेटफॉर्म पे जुड़े तो वहां पर जरूर है। मिस्टर रवि, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ लाइव स्ट्रीम पे। ये भी हमने न्यूज देखी थी कि एक्सआरपी इन्वेस्टर्स likely join likely bought the dip। ये नहीं थी न्यूज, तो ये थी XRP's price has risen 38% since lows reached during the Feb 6 क्रैश। हाँ वही तो मैं देख रहा था, हाँ हमारे पे नहीं है, बट वैसे है ये, आप दूसरे किसी प्लेटफॉर्म पे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। मैंने एक ट्रेड इस पे ओपन करा है। आज का ट्रेड मेरा बीटीसी पे, फिर से मैं बड़ा रिस्क ले लेता हूँ यार, मेरा फिर से ये नेगेटिव में चला गया है। 68,000 के ऊपर जा चुका है बीटीसी, but I'll wait for it to come downwards. Meanwhile, I'll also make a few more trades here and there. आप देख सकते हैं, आप लोगों को मैं मोटिवेट करने के लिए ट्रेड्स करता रहता हूँ। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि सिग्नल्स नहीं होते, तभी भी मैं ट्रेड करता हूँ, जस्ट टू यू नो टीच अ फ्यू पीपल हाउ टू ट्रेड, जस्ट टू मेक पीपल, मोटिवेट पीपल, यू नो pushing them to trade and try their hands at different trades। क्योंकि भाई थोड़ा बहुत गलती करोगे, सीखोगे, ये भी इम्पोर्टेंट है।
इसलिए मेरा काम है आप लोगों को हेल्प कराना ट्रेड करने में और पुश करना। आप ट्रेड देते ही नहीं हो। मैं ट्रेड दिया है, आज भी दिया है, वो जीवेट पे नहीं है। अब मैं क्या बताऊँ। मैं ट्रेड देता हूँ, मैं बहुत कम ट्रेड्स दे रहा हूँ अभी हाल के दिन में, बट और देंगे जहाँ होगा तो डेफिनेटली। गलत ट्रेड दूँ इससे बेटर है ना ट्रेड दूँ, मेरा ये मानना है। तो इसलिए मैं ट्रेड्स बहुत ही कम अभी प्रोवाइड कर रहा हूँ। हालाँकि मेरे पास ट्रेड्स होते हैं कई-कई बार और मैं शेयर करना उनको ग्रुप पे डालना भूल जाता हूँ, क्योंकि मैं ऑफ स्ट्रीम होता हूँ, ऑफ लाइव होता हूँ। तो आई एम ऑक्यूपाइड विद अ फ्यू अदर डिफरेंट थिंग्स, तो मैं ट्रेड शेयर करना भूल जाता हूँ, मैं अपना कर लेता हूँ और दूसरों को बताना भूल जाता हूँ, तो ये मेरे पास हो जाता है। तो गलत ट्रेड एक तो नहीं दूँगा कभी, और कई बार ऐसा होता है कि मेरे पे ट्रेड होता है पर मैं भूल जाता हूँ शेयर करना। तो दैट इज़ माय मिस्टेक, आई कंप्लीटली एक्सेप्ट। आई विल ट्राई एंड शेयर मोर गोइंग फॉरवर्ड। आपने आपका फीडबैक मैं पूरा मानूँगा सर, आप दिक्कत ना लें। Right. I welcome user 565514 to the live stream as well. Today we are looking at the picture of XRP. What exactly XRP is about? What exact XRP's use cases? What is its current status? How is it performing these days? How has it risen from the fall that it has had, and how exactly is its future going to be determined? That is what we are looking at today. And I hope that you are invested in the market and you are looking at the price of other coins as well, especially BTC has gone on to cross the 68,000 mark in the last couple of minutes. I'm looking to therefore close this trade out. And
तो XRP का एक बैकग्राउंड दे देता हूँ बिफोर वी actually start talking about where it is currently placed, how it is performing, and what is its current market status, what are the future projections and forecast regarding XRP. एक थोड़ा सा बैकग्राउंड देना बहुत जरूरी है. उसके बाद लास्टली हम लोग ये भी देखेंगे कि क्या key factors associated hai with XRP that could actually bring a change in how whether it goes on to become something really big in the next few years या फिर वो उतना ही रह जाता है जितना बाकी सारे ऑल्ट कॉइन्स हैं, राइट. ये सारे हम चीजें देखेंगे. करंट प्राइस क्या है ये तो मैं आपको दिखा ही चुका हूँ. इट इज करंटली अराउंड द 1.48 मार्क, है ना. तो ये हम देखते रहेंगे, साथ ही साथ ट्रेड भी करता रहूंगा थोड़ा बहुत. एक बार मैं SPX को देखना चाहूंगा बिकॉज उसमें ही सबसे ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिला था जो कि अब कम होता जा रहा है. ये 30 मिनट पीरियड है. 4 आवर पीरियड अगर मैं देखूं तो ये थोड़ा बढ़ता तो दिखा है लेकिन उतना बढ़ता हुआ भी नहीं है जितना ये एक बार जा चुका है उसके ऊपर. हाईएस्ट 0.3616 है 4 घंटे में, लोएस्ट 0.3560 है. तो एक बार देखते हैं. I don't think it will come downwards, so I'll make prediction 3 5 तो एक मैंने अभी अभी एक ट्रेड प्लेस करा है. इफ यू जस्ट जॉइन माय लाइव स्ट्रीम, जिसमें मैंने अभी पॉइंट ओपन ई ऑर्डर 0.3580 पे एंट्री ली है. ऑब्वियसली इट हैज नॉट गॉन टू दैट पॉइंट as of now, and therefore I think I'll look to cancel this trade and make another trade. सक्सेस हो गया. अब एक ट्रेड और मैं सेट करूंगा 0.3600 पे. वहां भी पता नहीं आएगा या नहीं आएगा. Right. On that note, I've opened another trade. Let's look at how it is performing now. मैं एक
1039. राइट, जैसे ही मैंने ये लगाया है एस पी एक्स पे, इट हैज़ एक्चुअली कम डाउनवर्ड्स to 0.3605. I've entered at 0.3609. Let's just hope that it goes upwards from here. We'll wait and watch, obviously. And in the meantime, I'll begin with a short, crisp background of XRP, what XRP is all about. Basically, faster transactions के लिए तो ये है ही, लेकिन क्या एग्जैक्टली ये है कहाँ पे, अभी कहाँ पे ये जाने का इसके चांसेस हैं कितने तक, और क्यों ये बनाया गया था, ये पूरी चीज़ें हम अब आपको मैं बताऊंगा। तो XPX को हटा के एक बार XRP आई ओपन, बिकॉज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट XRP मेनली थ्रू आउट दिस लाइव स्ट्रीम। XRP बेसिकली एक डिजिटल एसेट है, लाइक अदर एसेट्स एज वेल। रिपल जो है, रिपल लैब्स जो कंपनी है, वो इसकी ओनर है। और 2012 में XRP बना था, और जब ये बना था तो इट बिकेम एज अ फास्ट लो कॉस्ट means of transferring value and liquidity through across borders, and instead of relying on mining like other coins like Bitcoin do, XRP actually relies on transactions that are settled through a protocol on the XRP ledger itself, right? It's designed to be extremely fast and efficient with minimal fees. Faster transactions के लिए basically XRP जाना जाता है, faster plus cheaper transactions, ठीक है। इसको यूज करा जाता है एज अ ब्रिज करेंसी फॉर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स, ठीक है। अब रिपल ने इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए काफी सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ ग्लोबली टाई अप करा है, ग्लोबली पार्टनर करा है, या कह सकते हो कोलैब करा है। इसमें जो अगर आपने सुना होगा स्विफ्ट स्विफ्ट पेमेंट होती है, जिससे पेमेंट्स बहुत तेजी से होती है अक्रॉस बॉर्डर्स, ठीक है। तो स्विफ्ट पेमेंट बहुत पॉपुलर एक चला आ रहा है, काफी टाइम से चला आ रहा है। उनको ये कंपटीशन देना चाहते हैं, उनको ये रिप्लेस करना चाहते हैं फॉर एवर। और ये इसमें काफी सारे रेगुलेटरी चैलेंजेस भी आए हैं XRP के लिए, रिपल लैब्स के लिए। और उनकी जो यूएस की जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन है, SEC बेसिकली जो है, उनके साथ काफी लंबी लीगल बैटल्स भी रही हैं XRP की। और अब जो है करंटली अगर आप देखोगे तो इट इज करंटली एट 1.4888, 1.5 की तरफ बढ़ता हुआ। अभी हमने हाल ही में एक प्रेडिक्शन देखा जिसमें जो मेरे को बता रहा था कि ये जाएगा अराउंड $2.8 तक। पहले तो उन्होंने स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने प्रेडिक्ट करा था कि बाय ईयर एंड इट विल गो टू यू नो $8 तक भी जा सकता है, बट अब ये $2.8 पे आ गया, विच इज अराउंड डबल द अमाउंट दैट इज राइट नाउ। 1.48 पे है, 2.8 तक इसके जाने की संभावना है जो बन रही है।
साइबर एक बार देखना चाहूंगा मैं। मैंने I welcome user 681880 to the live stream as well. Now, if you've joined on uh, zbit.com YouTube as well, I am भाई देखो सामने ही सामने XRP 1.49 को टच करने का करता दिख रहा है यहाँ पे। और लास्ट लोएस्ट जो ये गया है वो गया 1.4852 तक। ये देखो अपने price 6 range would be around 1194.1230. That's a more point. WLFI पे मैं एक ट्रेड भेजने का फिर से सोच रहा हूँ। आई लुक टू सेंड दैट 10-11 डॉलर प्रॉफिट आप देख सकते हैं SPX पे आता हुआ। वी लुक एट XPX एज वेल। अभी मैंने एंटर करा था ट्रेड। my entry price was you can see 0.3609 0.362224 तक जा पहुंचा है। $15 का प्रॉफिट सीधा सीधा हो रहा है, आप देख सकते हैं। uh, अब एक और ट्रेड आई लुक टू सेंड ऑन माय टेलीग्राम ग्रुप। मीनवाइल अगर आपने मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो आप कर सकते हैं। इट इज बाय द नेम ऑफ जीबिट लाइव विद करण। दैट इज द नेम ऑफ द टेलीग्राम ग्रुप दैट आई हैव। I look to send out another signal here on the telegram group that I have. And if you are joined in on the telegram group, make sure that you do
follow this trade that I'm looking to do. $17 profit right in front of your eyes. $18 now. You can see I just went long on SPX as well. I did see a 10%, 9% decreasing percentage change, but I still felt like it will go upwards. I did make that trade, and now I do have a $25 profit to show. So a good trade to start of the day, एंड 40x का मैंने इसमें लेवरेज लिया था. I do hope that it goes upwards from here. It doesn't just fall down. It is currently at 0.363235. 0.3609 पे मैंने एंटर करा है, क्योंकि मुझे लग रहा था ज्यादा होता जा रहा है, क्योंकि मैं 0.3600 पे एंटर करना चाह रहा था. प्रॉफिट और भी ज्यादा होता. आई डिड गेट लेट, तो मैं नहीं कर पाया वो, बट अभी भी प्रॉफिट है, अच्छा खासा है. एंड यू कैन सी फॉर योर सेल्फ ऑन दिस P&L here. 0.1165 पे ये है. uh, $36 profit on your screens, on my screen to show. I entered at 0.3609 and it is currently at $36 this profit. SPX जो है वो बढ़ता ही चला जा रहा है. I'll wait till I make a good ROI and then come out of this trade, close this trade out. I'll keep a constant eye on it, and meanwhile I'll also look to spend on another coin. ENS पे 7 पॉइंट लोएस्ट हुए गया है, 60 मिनट्स में हो गया है 6.929. हाई जैसे ठीक है 7.018. Second trade of the day, both of them in profits, and I look to make more and more trades today.
$50 profit straight away on SPX, ladies and gentlemen. You can see for yourself. SPX पे $50 का प्रॉफिट 40x लेवरेज के साथ $55 प्रॉफिट टू शो 3609 पे मैंने एंटर करा है. 3669 हो रहा है अब ऑलमोस्ट. 60.60 का सीधा सीधा डिफरेंस यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन. इट्स अ $53 प्रॉफिट, $55 प्रॉफिट ऑन SPX USDT. If you entered at the right time, you would have definitely got some kind of profit. 3 कॉइन्स का मैंने और भी आपको आपसे अभी अभी सिग्नल शेयर करें. नाउ दिस इज एट 0.03962. आई सेड दैट इट लेनी आपको 0.39 क्या 3.4. I expect this to go short. राइट. हाँ 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 हाँ, प्रॉफिट्स थोड़े कम होते हुए यहाँ पे. आई एम लुकिंग एट XPX जहाँ पर $55 का प्रॉफिट था मुझे, बट अब वो घटता जा रहा है. सो आई लुक टू क्लोज दिस ट्रेड आउट and take whatever profit I've got. I'll also look to close INSU as well, ENS as well. किसी और कॉइन में भी एक ट्रेड कर सकते हैं. Nori Boro, I welcome you to the live stream. I hope you're doing fine. I hope you're also making some kind of trades on zbit.com. The topic of the day has been that of XRP Ripple. I did tell you a background of what XRP is all about. It is for faster and cheaper transactions, extremely fast transactions. That is what is the background behind that of XRP. That is the topic of the day. I gave you a small overview of why it was launched in the first place and how it has actually has its own legal fights and with the Securities and Exchange Commission in the US, the SEC, what regulatory challenges it has faced and how it is used as a bridge currency for cross border payments or transactions. And why is how is it going to replace Swift, that is another mode of payment for क्विकर फास्टर ट्रांजैक्शंस. तो ये मैंने आपको अभी अभी बताया.
Apart from that, now we'll look at, as I come from this short break. It's been 1.5 hours for me on this live stream. When I come back from this break, I will look at what is the current market status when it comes to XRP, and I will also look at what are the future projections for XRP, because there have been all kinds of predictions, very wilder ones as well, some of them that might actually never come true also, and a few predictions which predicted till a few months, a few weeks back, when there was this massive dip in the market in the February 6th crash. A few predictors also predicted that it will go towards the $1 amount, but that hasn't happened. It has stabilized, it has instead outclassed BTC as well as Ether in terms of growth as well ever since that fall, and it has looked to maintain the 1.3, 1.4 bracket, 1.5 it is about to now touch. So that is the situation of XRP. But we look at that in a more analytical way. We look at that with an eye on what the future holds. I also did read a prediction that said that XR, and it was a very wild prediction. It did say that XRP अब जाके actually 6 साल बाद यहाँ से BTC से भी बड़ा कॉइन बन जाएगा, ऐसी करके भी मैंने एक प्रिडिक्शन करी है, ये किसी एंटरप्रेन्योर ने करी थी. Now it sounds very weird and very amusing, but I have read this article as well. I will share it with you in the next couple of minutes as I come back from this short break. But if you are a new user, and if you've not deposited, I do have a giveaway offer for you that if you've not listened to, you should listen. I can give you from my side 20,000 Pepe or 20,000 Shiba Inu coins absolutely free of cost. And you do not have to do anything. You just have to make a $3 or more deposit, right? It is a very nominal amount, very small amount, very reasonable amount that we have kept. I feel like everybody who is joining on our platform can make this amount of deposit. And once you do that, just let me know your user IDs. I will transfer from my side 20,000 Pepe or 20,000 Shiba Inu absolutely free of cost to your deposit, to your Zbit account. So you can then begin your crypto journey on a positive note on zbit.com. That is all we want. We want you to have a good time here on zbit.com when you're trading, when you're doing futures trading or spot trading, when you're bidding on any of these coins, whatever future predictions you are making, right? तो हमारी तरफ से आपको थोड़ा सा बूस्ट मिल जाएगा अगर आप ये करेंगे तो, और आप फिर उसके बाद ऑब्वियसली अपनी क्रिप्टो जर्नी की शुरुआत एक अच्छे नोट पे कर सकते हैं. जब वापस आऊंगा ब्रेक से तो आई विल लुक एट XRP आज कहाँ पे है, क्या फ्यूचर प्रेडिक्शंस हैं, और वो वाइल्ड प्रेडिक्शन जिस बंदे ने प्रेडिक्ट करा है कि ये BTC को भी आउटक्लास कर देगा, मुझे नहीं लगता करेगा. But again, there have been all kinds of wilder predictions. Maybe he's very bullish on XRP. That is his take, not my take. But I will share that with you as well. मेरे अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पे बने हुए हैं तो मैंने वहां पर भी आज 3 सिग्नल्स शेयर करे हैं. तीनों की तीनों कॉइन्स खैर हमारे प्लेटफॉर्म पे नहीं है, बट आप उस सिग्नल का फायदा उठा के आप प्रॉफिट कमा सकते हैं. मेरा टेलीग्राम ग्रुप का नाम zbit.com live with करण है, और वो नीचे ही उसकी लिंक जो है 3 डॉट्स, अगर आपके पास एक एंड्रॉइड फोन है, iOS में अभी अपडेट नहीं आया है, वेलकम यूजर 470942 टू द लाइव स्ट्रीम एज वेल. मेरा टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो. ज्वाइन करोगे तो आपका फायदा है, क्योंकि वहां पर आपको मैं फास्टर सर्विसेज दे पाऊंगा इन टर्म्स ऑफ डिपॉजिट्स, विड्रॉल्स. कोई भी आपको क्वेरी है हमारी कस्टमर सपोर्ट टीम से, आई कैन बी द ब्रिज, आई कैन बी द लिंक बिटवीन यू एंड आवर कस्टमर सपोर्ट टीम. आई लुक टू सॉल्व आउट एनी इश्यूज दैट यू हैव इन रिगार्ड टू डिपॉजिट, विड्रॉल्स और लेटेस्ट ऑफर्स और रिवॉर्ड्स. कुछ भी आपको चाहिए मेरी तरफ से, आपको उस प्लेटफॉर्म पे आपकी क्वेरी जल्दी से जल्दी मैं सॉल्व कर पाऊंगा. तो आप ज्वाइन करिए एनी ट्रेड सर. आई हैव शेयर्ड अ फ्यू ट्रेड्स ऑन माय टेलीग्राम ग्रुप नोरी बोरो, सो प्लीज आप उसको ज्वाइन कर लीजिए. डू मेक श्योर दैट यू कैन ज्वाइन इट.
I have shared 3 trades in the last 15-20 minutes on my Telegram group. Yeah, so I've shared 3 trades. Uh, Unfortunately, all of these 3 coins are not on zbit.com, but if you want, you can do make these trades on any other platforms, whether you are on Binance or any platform for that matter, CoinDCX, anywhere, CoinJeco, but I'm missing. I Look, I've just shared them three trades in the last 15-20 minutes. If I do have more trades with me, more signals, I will definitely look to share. But wait. I am not giving out a signal or a trade as of now, but I will give you one small piece of advice or one small coin. This is SPX USDT. I entered at 0.3609. I made a exit at 0.3650. You can also still enter this and make a trade if you want. But it is not a signal that I'm giving out, but you can try. It might. Okay, I'll also make a trade right in front of you so that you're not alone here and you can also make this trade. But make sure I'll be bullish here. I'll open long. I'm not sure that I've entered at points 3662. Yeah, so it has touched that point now. The position will be open. It is open. I'm taking a risk here. You can also do that if you want. I've been bullish. I've opened long and I've placed a 50% size and 40x leverage on it. You can lower the leverage and try your hand at this. It looks like it is on a bullish phase right now. You can make a trade here. SPX USDT में आप कर सकते हो. No risk, sir. Sorry. Look, this crypto world is entirely full of risk. Even if someone is giving out a signal, it is still full of risk, I would suggest. So I think you can try this. Make a small leverage. You don't have to risk big. You can use. Look, I've already gained. Uh, you know, market price is around $1 here. ये क्या हुआ है? एक minute. Look, I've already gained around $1. If you want, you can try your hand at this trade. And keep an eye on it. If you don't want, then it's okay. I've shared 3 trades on my Telegram group. You can look at that. I welcome user 453497 to the live stream. If you're a new depositor and if you've not made a deposit, kindly go ahead and make a deposit, because you can get from my side 20,000 Pepe or 20,000 Shiba Inu coins absolutely free of cost. You don't have to do anything extra. You just have to make a $3 or more deposit. You can make a $30 deposit, $300 deposit, your wish. But please, I would suggest that if you are a new depositor, if you've just joined zbit.com, a lot of people actually miss out on this offer. That is why I'm telling you. Also, this offer will not be live for long. Now, till it is the bonus that I am giving out from my side, motivating you to make a deposit. So, if it's your wish, if you want to make a deposit, you can do so. On that note, I'll take a short break and I will look to come back in the next few minutes. When I come back, I will look at the prices of XRP, the future of XRP, and what are the projections for XRP. Noriboro, please do join me after the short break, because I will be making more trades as well. I'm afraid that there will be risks involved with all trades. That is how it goes in the world of cryptocurrency. The market is very volatile as well these days.
So you can expect a risk here and there, because that is the only risk is also a good indication for reward as well. Where there is risk, there is some kind of reward as well. So stay tuned. When I come back, I'll look to make more trades for you.
Welcome back to the live stream, Nori Boro. I welcome you. It's, I mean, very nice that you've still been here. Uh, I will look to make more trades here and there. I was telling you to, make a trade on SPX, and as you can see, Noriboro, I was telling you to take a risk. I do have a $47 profit because of my trade, and it is all about risk, right? I was telling you to go long on SPX because the indications were so. I do have a $47 profit here on SPX. Did you place a bid? Did you make a trade? Did you make a trade then? See, I do have a $70 profit now on SPX USDT. It's so much fun when all these trades actually work out, and you get to enjoy all these profits and your PNL is in green, right? So very happy that this trade did work out for me. I will look to close this trade out in the next couple of minutes. It was my entry price was 0.3662. 3662. It is currently at 3717 and showing good signs, positive signs, a good market sentiment, and therefore I expect it to go further up as well. So let's see if that happens or not. Even if it doesn't happen, I still have a $50 profit with me, which I'm happy to take. I'll look to make a few more trades.
back below 68,000, making the earlier bounce to above 70,000 look weaker. Reclaim 70,000 and momentum resets, fail again, and the market starts pricing a deeper retracement. So it has become already very much important that BTC goes on to touch the 70,000 mark, because if that doesn't happen, the markets have a tendency right now to fall deeper. And when that happens, there sometimes seems like there is no stopping to the fall. And on that note, there is a good surge in the price of SPX USDT. Now, if you've been long on this, I welcome user 729093 to the live stream from Nigeria, beautiful country. And I hope that you are not a new user, because if you are a new user and if you've not made any withdrawal, then any deposit, sorry, then what are you waiting for? I do have a deposit offer with me for you, specially for you. What you can do, user 729093, is make a deposit of three or more dollars by tapping on the deposit option just below me, right on my live stream. Tap on it and get a 20,000 Shiba Inu coins or 20,000 Pepe coins absolutely free from my side. You don't have to do anything extra. Just deposit and take away these coins, right? SPX meanwhile is on a whole new level, rising and rising and rising. My entry price was 0.3662. It's currently at 0.3736. A $75 to show profit. Nothing can get better than this. And just as I said, a $75 profits have slightly dwindled, come down slightly.
And the prices, it looks like, have come crashing down. I will look to make an exit, take a $40 profit fast, and come out of this trade. What an absolute roller coaster of a period SPX USDT has had in the last couple of minutes or so. Good, decent rise hike, and absolutely, went over the roofs in the last couple of minutes. We look to enter this trade of pole. Look, what I've also said numerous times on my live stream is that often what happens is that I do not have any signals as such, but I do trades just because I want to show you. A few people here are very new to the app, very new to crypto as well. I look to make trades so that I motivate you somehow to make these trades and get better with time. Obviously there might be no signals. I make trades because I feel like pushing you all to make trades. I've just made another trade. I've opened this trade on pool USDT. Let's hope that I do make some profit, although it doesn't look like, it hasn't started that well. Looks like the market is expected to go down further, and it well is. Not a good trade, not started well at all. So I look to close this out, then make another trade. I don't think it'll go down further though. 0. Okay, we'll keep tracking this trade, but the topic of the day has been XRP, and how it's doing currently is what I'm going to be looking at now.
because the current status is around the fact that XRP is dealing somewhere around the 1.488 mark, and it doesn't look like it'll probably fall down further. It looks like instead it's maintaining, it's stabilizing. It is finding it slightly tough to touch the 1.5 barrier at the moment, because there is some kind of resistance around that mark. But if it does go on to touch 1.5, the only way for XRP in my view would be upwards. So there is, although this kind of weakness and the current market status is so volatile, crypto market does look like broader sentiment that is has right now is bearish and reflecting some kind of buyer weakness, to be honest. Sellers are dominating, and therefore, even in spite of all of these things, XRP has, I would say, it has done well. uh, Now, it has obviously declined a lot. It has also gone till the $3.8 mark as well in the last year or so, in 2025, probably when Donald Trump came to power. एंड उसके बाद से फिर ये गिरता ही चला गया, कम से कम 30-40% तक का फॉल इसने देखा है वहां से. बट मेरे ख्याल से जो टॉप 5-6 क्रिप्टो करेंसीज हैं, उसमें बहुत इम्पोर्टेंट क्रिप्टो करेंसी है एक XRP, और इस पे हमेशा नज़र बनी रहती है लोगों की. I'll still show the article that I did read about in the last week or so. I think I read that. ये देखो, this is the article that I was talking about. XRP जो है BTC को भी 6 सालों के अंदर डिथ्रोन कर देगा और नंबर 1 कॉइन बन जाएगा. ये एक यूएस आर्मी वेटरन और XRP कम्युनिटी इन्फ्लुएंसर ने बोला. ऑब्वियसली इसकी बातों पे इतना मतलब न्यूज़ आर्टिकल तो बन गया है, लेकिन इसकी बातों पे इतना गौर करना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये खुद एक बुलिश बिहेवियर रखता है ये बंदा. बहुत ही उनके कम्युनिटी का फेवर में रहता है. बट इन्होंने कहा है कि देर कुड बी अ 1500% इंक्रीज फ्रॉम टुडेज ट्रेडिंग लेवल. आज 1.4 1.5 पे है, 1500% इंक्रीज कर सकता है, इनका कहना है. पर इसके लिए XRP को $22.5 पर टोकन के प्राइस को मैच करके बिटकॉइन मार्केट वैल्यू को मैच कर पाएगा. तो ये फोरकास्ट जो है मुझे लग तो बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस रही है, लेकिन you never know in the world of cryptocurrency, anything can happen. Whether Bitcoin actually goes on to become much more bigger, or whether XRP goes on to become much more bigger, ये तो भाई वक्त ही बताएगा. लेकिन फिलहाल के लिए जो है वो यही है कि अभी तो XRP has to do a lot. मीनवाइल हम पोल को भी देखेंगे. पोल USDT पे हमने इन्वेस्ट करके रखा है. हमने बिट करा है 1.1033 पे. ये बेरिश चला गया यहाँ से जहाँ पर मैं था, देयरफॉर आई हैव अ -$5 लॉस. SPX पे मैं नज़र बना के रखूँगा, क्योंकि SPX एक ऐसा कॉइन है जो सबसे ज़्यादा मूवमेंट दिखा रहा है इस दौरान. 0.3677 पे आ गया है वापस. Now I had entered this at somewhere around the 3609 mark. It is still way above that point, and it has also gone to a 3700s वाले मार्क में भी ये जा चुका है.
अगर आप लाइव पे बने हुए हैं तो आपने देखा होगा कि आज मैंने 3 ट्रेड्स शेयर भी करे हैं। अगर आपको ट्रेड करना है आप उन पे कर सकते थे। ऑब्वियसली अब थोड़ा-सा स्लाइटली लेट हो गया है, और भी ट्रेड्स जैसे-जैसे आएँगे मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे मैं शेयर करता ही रहता हूँ उनको, इफ देयर आर मोर ट्रेड्स एंड ये सारे जितने भी कॉइन्स हैं ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट a lot of these coins and their future actually depends on the crypto bill as well, whether it comes in, whether it comes on time, whether when it comes these coins are in a state of survival, सबसे बड़ी बात तो ये सारी चीज़ों पे ये सब कुछ डिपेंड करेगा। जितना जल्दी ये बिल्स आएँगे, उतना जल्दी चांस है कि ये कॉइन्स और जल्दी डेवलप होना स्टार्ट करेंगे। अगर आप ये आर्टिकल भी पर्टिकुलरली पढ़ें, सॉरी ये आर्टिकल नहीं था वो। A lot depends on the cryptocurrency bill that Donald Trump has talked about in the last couple of days at the World Economic Forum in Davos. तो ये जितनी भी चीज़ें डिपेंड करती हैं उस पे, इसलिए डिपेंड करती हैं कि वो जो बिल है वो बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी लाएगा मार्केट में, बहुत ज़्यादा एक फ्रेमवर्क तैयार करके लाएगा। ये सारे कॉइन्स और जितने भी एक्सचेंजेस हैं, दे विल बी इन अ मच बेटर स्टेट ऑफ अफेयर्स, operations will be better on crypto exchanges as well. There will be some kind of regulations, guidelines and rules and taxation policies, जो सारी चीज़ें हैं eventually निकल के आएंगी इन इस क्रिप्टो बिल में। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये क्रिप्टो बिल जल्दी आए, और XRP भी इज़ नो डिफरेंट। It will actually get towards a better situation when this bill is passed, and the future will be much more brighter then. पोल पे हम नज़र बनाए रखेंगे। आई डोंट हैव अ लॉस ऑन पोल एज ऑफ नाउ, इट्स अ $0 प्रॉफिट दैट आई हैव एंड अ $0 लॉस बिकॉज दिस इज माय एंट्री प्राइस एज वेल, where it is currently at. Now, will it go further up from here or not? We'll have to see, because I have been long and bullish on pole for the next couple of minutes. Let's just hope and see how it does. Apart from that, we'll also look to bid on a few other coins. मैं changes देख रहा हूँ actually, percentage change कितना है सारे coins में।
$30 प्रॉफिट ऑलमोस्ट फॉर पोल। मेरे को लग रहा था ये ऊपर जाएगा और अब जा भी रहा है। 11125 तक पहुंच गया है। मेरा एंट्री प्राइस आप देख सकते हो। क्या था मेरा एंट्री प्राइस? 11127 था। अब देखो, नहीं नहीं, मेरा एंट्री प्राइस 11047 था, सॉरी। अब कम भी हो रहा है प्रॉफिट वैसे, बट आई स्टिल होप और ऊपर जाएगा यहाँ से। अभी 11092 तक पहुंच गया है। $17 का प्रॉफिट, $19 का प्रॉफिट, फ्लक्चुएट कर रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रॉफिट्स जो हैं वो थोड़े से ड्विंडल जरूर करे हैं। अगर आप देखें, आई वेलकम नोरी बोरो बैक टू द लाइव स्ट्रीम। आई एम लुकिंग एट पोल यूएसडीटी। आई डिड हैव अ गुड प्रॉफिट in the last couple of minutes. I did have a $30 profit as well, which has come down to $9-10 in the last couple of minutes, which is okay, but I still expect it to go further up from here. I entered at point 11047. It is currently at 11080. ठीक है, तो I have a $13-14 profit. I'm waiting for profits to maximize, and then I will look to make more trades. As you can see, a $14 profit right in front of your screens. I am looking to maximize this. I am looking to wait for this to go further up. पोल पे इस पे हम नजर बना के रखेंगे लगातार. Apart from that, I'm looking to, you know, make more trades. I'm looking at coins जिसमें सबसे ज्यादा मूवमेंट देखने को मिली है. ज्यादा कॉइन्स में इतनी मूवमेंट देखने को मिली नहीं है. IMX इज शोइंग गुड साइंस. In the last 4 hours, it is grown it grown 4.38%. I think we can point 1739 again open long. लेट्स होप इसमें भी अच्छा. अरे लेकिन यार इसमें I look to cancel this because I'll tell you why. Because I do not, I haven't set up higher leverage. I do have a habit of sending at least a 30 leverage. 0.17.
इसमें यार एक प्रॉब्लम है, ये बहुत धीरे धीरे फ्लक्चुएट हो रहा है। इससे बेटर है आई लुक एट अदर कॉइन्स। फिर से एक बार एस पी एक्स को I think I can go short on GTO USDT. Lekin again, the movement is slightly slow. पोल पे प्रॉफिट ज़्यादा हुआ नहीं। आई लुक टू क्लोज दैट ट्रेड आउट बिकॉज इट इज फॉलिंग फास्ट। आई जस्ट चेक वंस हाउ मच आई मेड। $2.48, not much, but it's okay. Still not bad, I would say. Last for 4914 lower there is 1934. I think I can. ठीक है. On that note, I'll take a short break. I've made a few trades here and there. I welcome user 582 428 to the live stream as well. Hi, बहुत बहुत स्वागत है आपका. I welcome user 262 268 231 as well. आपका भी बहुत बहुत स्वागत है. भाइयों बहनों, अगर आप नए यूजर हैं बाय द वे, तो एक बार बता देता हूँ, डिपॉजिट ऑफर चल रहा है. डिपॉजिट ऑफर ये है कि आप पहले जो डिपॉजिट करोगे अपना फर्स्ट डिपॉजिट जीबेट.com पे, उस पे आपको मेरी तरफ से मिलेंगे 20,000 पेपे या 20,000 शिबा इनू बिल्कुल फ्री. तो वो आप जरूर ले लेना, वो मिस मत करना, क्योंकि मिस कर दोगे तो फिर आप जितने पैसे ऐड करोगे अकाउंट में उतने ही रहेंगे. एक बोनस जो हमारी तरफ से वो मिल सकता है वो नहीं मिलेगा आपको. ठीक है. यूजर 4 नोरी बोरो, बहुत बहुत स्वागत है. वेलकम बैक नोरी बोरो. आई मेड अ फ्यू मोर ट्रेड्स एज वेल. अभी ओपन है, ऑर्डर हुआ नहीं है. 4921 मेरा एंट्री प्राइस था, वहां तक एक गया नहीं है. ओके, आई गेट इट, आई गेट इट, आई गेट इट, आई गेट इट. आई लुक टू कैंसिल दिस. ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिल भी नहीं रही है यहाँ पे. ईथ मीनवाइल थोड़ा सा बढ़ता दिखा है, 2020 तक गया है. लेट्स प्लेस अ बिड ऑन ईथ.
with a long bid, long next trade signal. नोरी बोरो कितने ट्रेड शेयर करूं यार मैं? ट्रेड करें अभी आपके सामने ही करे मैंने, आपने देखा था मैंने आपके रहते रहते मैंने अभी पोल पे लगाए थे, मैंने आपके रहते रहते एस पी एक्स पे लगाए थे. आई डिड अर्न अ $50-60 प्रॉफिट ऑन. आई एम मिसिंग टाइम, या यू आर मिसिंग ऑल द टाइम, because it is very important for you to be there when I am making a trade. 2020.76 भाई इसी पे तो एंटर करा था मैंने. अगेन ये भी ओपन नहीं हुआ है. ठीक है, वेट फॉर दिस टू ओपन. So what? Today, meanwhile, we are tracking XRP, that is the coin in focus today. And not just tracking, I've given you an overview about what XRP actually was made in the first place for, and what was the thinking behind it. What is it known for? Whether it is known for, faster, cheaper transactions. That is what it's known for. And all the legal challenges that it has had to face, all the regulation challenges it has had to face in the US. We've discussed that as well. We've also discussed about what are the projections are, and the projections are either ways. And we are going to now look at, when I come back, I did also show you what expectations, what predictions someone made when it comes to matching or going past and dethroning BTC in the next 6 years. That is a very wild prediction, bullish prediction from someone who is a part of the XRP community as well. So when we come back, I look at more crypto related news in the market, and I'll also look at a few more trades, right? So stay tuned. I will be back after this short break. Have some water, I'll have some quick snack, and then be back on the live stream. Stay tuned, and I will be joining you in a few minutes.
Welcome back to the live stream. I hope that you are constantly following the price of ETH, of BTC, and that of other altcoins as well. I have been constantly making trades, and I welcome user 77283 to the live stream. Today, the topic of the live stream has been particularly about XRP, and that has been our, you know, on our agenda. It's been our focus coin. We have looked at an overview of what XRP is all about, how it is faring, how it is performing, what are the expectations around it, what are the projections around it, when is there going to be a breakout period, and when exactly and why exactly is it among the top 6 coins, cryptocurrencies in the world, right? That is what we have been looking at. I will look to make another trade on. I don't think so. There will go to the 87 point. SPX जो है वो आप देख सकते हैं, क्या बढ़िया प्रॉफिट्स दे रहा है थोड़ी थोड़ी देर में। अभी तो $7 $9 तक आ गया, अभी 16 तक भी चला गया था। मैं क्लोज करने आऊंगा तो आई विल लुक टू क्लोज दिस ट्रेड। भी $14 के उस पे आ गया है, और काफ़ी कंटिन्यूसली हम इसको फॉलो कर रहे हैं। इट हैज मेरे एंट्री प्राइस आप देख सकते हैं, मैं इस पे ऑलरेडी $40-50 कमा चुका हूँ। यूजर 791923, मैं इस पे ऑलरेडी SPX पे $40-50 कमा चुका हूँ। अभी मैंने दिखाया था ट्रेड करके थोड़ी देर पहले ही, तब मेरा एंट्री प्राइस 0.3609 था। अब देखो 0.3705 है, और ये 377 तक भी गया था, है ना? नहीं, कितने तक गया था, जहां तक भी गया था $50 का प्रॉफिट था, मैंने एग्जिट मार लिया।
अब मैंने वापस एंट्री ली है, $50 कमाने के बाद मैंने दोबारा एंट्री ली है 0.37, सॉरी 0.3687 पर, 3687 पर। अब देखो 0.3712 पे है, $26 का प्रॉफिट अभी दिख रहा है, और बढ़ रहा है कम हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा वेट करेंगे, बट एक अपवर्ड्स ट्रैजेक्टरी पे बुलिश रन पे है एसपीएक्स, और थोड़े घंटों से है, काफी घंटों से है। तो जरूर आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। मैं कोई ट्रेड सिग्नल आज सच नहीं दे रहा हूँ, लेकिन यू कैन डेफिनेटली लुक एट दिस कॉइन। एक अपवर्ड्स, अगर आप लास्ट 4 आवर्स का इसका ट्रेजेक्टरी देखें तो ये देखो आप, यू कैन क्लियरली सी द surge in prices over here. The market sentiment currently in favor of XRP. It's going, sorry, of XPX. It's going towards the 3724 mark as well. और भी ज़्यादा हाई जाने के chances हैं. We are looking to follow this, and let's hope that it does go to even higher. देखो $40 का प्रॉफिट सीधा सीधा बन रहा है। ये देखो, ऑलमोस्ट $50 प्रॉफिट सिंस द लास्ट 5 मिनट्स भी नहीं हुए, मैंने अभी ये ट्रेड सेट करा है। और आप देख सकते हो।
$50 के ऊपर जा चुका है ऑलरेडी ये प्रॉफिट एसपीएक्स का. इफ यू कैन वॉच ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन, ऑन योर मोबाइल एप्स. 55 dollars. Very nice to see all this profit. 3.373532 के आसपास है ये. And I have a $50 profit to show. I think I should obviously look to withdraw it before it dwindles down and comes falling. I look to close this trade out. Or should I wait? That is the question on my mind. Uh, oh, so you've lost $100 yesterday on which coin? User 791923. Which coin? Uh-huh. I look to close this trade out. I'll take a $30 profit and I'll walk out of it. $30 का हुआ भी या नहीं हुआ एक बार देखना पड़ेगा. $26 आए, ठीक है. क्लोज करते करते वो गिरने लग गया प्राइस. $100 किस पे खोए आपने? यूजर 791923. विच कॉइन डिड यू लूज $100 ऑन yesterday?
Which coin did you lose $100 on yesterday? What trade did you lose what trade did you lose $100 on yesterday? ईएनएस का लास्ट 4 आवर पीरियड अगर मैं देखूं तो ऐसा कुछ रहा है, हाईएस्ट ही गया है 7.054 तक, लोएस्ट गया है 6.923 तक। ठीक है, टेस्ला ने 414 हिट करा है। I welcome user 487745. Now, guys, if you any one of you is a new depositor or new on zbit.com, and if you've not made any kind of deposit so far, there is a deposit offer running right now. Since you are here, मैं एक बार बता देता हूँ, आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने पहले डिपॉजिट पे मेरी तरफ से 20,000 पेपे कॉइन्स या 20,000 शिबाइनो कॉइन्स बिल्कुल फ्री मिलेंगे। कुछ नहीं करना है, आपने बस डिपॉजिट करना है। डिपॉजिट कितना करना है? $3 मिनिमम अमाउंट है, आपको उससे ज्यादा कितना भी करना है आप कर सकते हो। उस पे आपको मिलेगा मेरी तरफ से 20,000 पेपे या 20,000 शिबाइनो। ये ऑफर खाली नए डिपॉजिटर्स के लिए है, क्योंकि आप लोग आए हो हमारे हिंदी में बोलें, तपस दास जी हिंदी में ही बोलेंगे, अब आपने बोल दिया तो डिपॉजिट ऑफर चल रहा है तपस दास जी, वो बता रहा हूँ। अगर आपने कभी इन्वेस्ट नहीं करा है, कभी डिपॉजिट नहीं करा है zbit.com पे, तो आपको पहले डिपॉजिट पे 20,000 पेपे कॉइन या 20,000 शिबा इनू कॉइन्स बिल्कुल फ्री मिलेंगे। ठीक है, आप डिपॉजिट करिए। डिपॉजिट का मिनिमम अमाउंट जो हमने रखा है वो $3 रखा है, कोई ज्यादा बड़ा अमाउंट भी नहीं है, कोई ज्यादा छोटा अमाउंट भी नहीं है, रीजनेबल अमाउंट है, नॉमिनल अमाउंट है। तो आप कर सकते हैं डिपॉजिट और अपना क्रिप्टो जर्नी की शुरुआत zbit.com पे एक पॉजिटिव नोट पे कर सकते हो आप। ठीक है, अच्छा, ये खाली नए डिपॉजिटर्स के लिए, पुराने डिपॉजिटर्स के लिए नहीं है। जो अगर डिपॉजिट कर चुके हो एक बार, उनके लिए नहीं है ऑफर। और एक और चीज बता दूं, डिपॉजिट अगर आपको करना है तो डिपॉजिट का जो ऑप्शन है नीचे ही है मेरे, उसी पे टैप करना है। नीचे है मेरे लाइव स्ट्रीम के विंडो पे, जहां मैं आपको दिख रहा हूँ उसके नीचे ही डिपॉजिट का ऑप्शन है, राइट हैंड साइड बॉटम पे, उसी पे टैप करके मिलेगा ये मेरी तरफ से। डिपॉजिट कर दोगे तो मुझे बता देना, मैं अपनी यूजर आईडी आपकी मैं शेयर कर दूंगा अपने सपोर्ट टीम से, और वो आपके अकाउंट में डाल देंगे 20,000 पेपे या 20,000 शिबा इनू, उनमें से एक कॉइन डाल देंगे, 20,000। ठीक है, डन। आज का हमारा टॉपिक जो है वो भी बता देता हूँ एक बार, एक्सआरपी से रिलेटेड है आज का टॉपिक। एक्सआरपी एक कॉइन है जिसके बारे में हम बता रहा हूँ। बेसिकली उसका यूज केस ये है कि वो फास्टर और चीपर ट्रांजैक्शंस के लिए दुनिया में लाया गया है। एक्सआरपी इस वक्त आप प्राइस भी देख सकते हो 1.4867 यहाँ तक है। अच्छा, सबसे बड़ी बात इसके बारे में, जब ये लास्ट के कुछ दिनों में, अभी February 6 को एक मैसिव क्रैश आया था मार्केट में, बीटीसी गिरा था बहुत ज्यादा, है ना, बिटकॉइन गिरा था, तभी भी ये भी गिरा था, थोड़ा सा गिरा था, 1.3 तक आ गया था भाई। बहुत संभावना थी, बहुत लोगों को ये लग रहा था कि अब ये $1 पे आ जाएगा। अच्छा, ये जो है ये $3.8 तक भी जा चुका है। कब? जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पावर में आए थे दोबारा, अभी लास्ट ईयर 2025 में जून जुलाई के आसपास, ये तब अपने ऑल टाइम हाई पे चला गया था। वहां से ये गिरा है और गिरते ही चला गया है। लेकिन अभी हाल ही के दिनों में जब सारे कॉइन्स इतने ज्यादा गिरे हैं, एक्सआरपी और भी गिरने की उम्मीदें थी, एक्सआरपी नहीं गिरा है। एक्सआरपी ने अपने आप को मेंटेन करा है, स्टेबलाइज करा है, और अब संभावना ये है कि 1.5 टच करने के करीब है। और जहां बाकी सारे कॉइन्स गिर रहे हैं, ये अपने आप को स्टेबलाइज कर रहा है, ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, ये है आज का हमारा टॉपिक एक्सआरपी के बारे में। इसके बारे में कब ब्रेकआउट आएगा, क्या प्रोजेक्शंस हैं, कैसे धीरे धीरे करके ये और ऊपर जा सकता है, क्या लोगों ने प्रेडिक्शन करी है। किसी ने कहा है कि भाई $2.8 तक जाएगा, किसी ने कहा है कि भाई $5 तक जाएगा साल के एंड होते होते तक, और एक बंदे ने तो इतनी वाइल्ड प्रिडिक्शन दी है, मैं बता देता हूँ आपको। उसने कहा है कि अगले 6 साल में, नेक्स्ट 6 ईयर्स में, उस बंदे को लगता है वो
मतलब बहुत ही बुलिश है एक्सआरपी पे। एक्सआरपी की कम्युनिटी का हिस्सा है। उसने कहा है कि एक्सआरपी जो है बिटकॉइन को भी डिथ्रोन कर देगा और नंबर वन कॉइन बन जाएगा दुनिया का। मतलब मुझे पता है कि बहुत वाइल्ड प्रेडिक्शन है, लेकिन हर तरह के प्रेडिक्शंस होते हैं, ऐसी कोई इसलिए आजकल मेरे को जितने भी मैं वाइल्ड और आउटरीजियस प्रेडिक्शंस मैं सुन लूँ, मुझे वो इतने आउटरीजियस लगते नहीं है, क्योंकि इतने वाइल्ड वाइल्ड हो रहे हैं। अच्छा, जब गिरने लगे थे अभी प्राइसेस हाल ही में, मार्केट बेरिश स्टेट ऑफ अफेयर्स में है अभी भी, खैर अभी भी चल ही रहा है वो पैटर्न। एक बंदे ने प्रेडिक्ट करा है कि, और वो भी स्टैट्स के हिसाब से, ऐसे नहीं बोल रहा, एक 136 ईयर ओल्ड कंपनी है जिसने प्रोजेक्शंस चेक करे थे, और जब जब बीटीसी गिरा है बहुत ज्यादा, तब तब जो उसका लोएस्ट पॉइंट है उन्होंने उसको कनेक्ट करा, और इस जब उन्होंने कनेक्ट करा तो जो लोएस्ट पॉइंट इस साल का आके बना वो 38,000 पे बना, रुका $38,000। तो पूरी पूरी संभावना थी उनके हिसाब से कि बिटकॉइन जो है $38,000 तक आएगा, फिर उसके बाद वहां से जाके उठना स्टार्ट होगा। सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई स्टैट्स के हिसाब से है, डेटा चेक करके उन्होंने एनालिसिस करके सारी चीजें करके प्रोजेक्शन बनाया, लेकिन असली पिक्चर तो कुछ और ही है ना? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अभी भी संभावना है कि बीटीसी अभी और नीचे जा सकता है। अगर ये 70,000 बैरियर से ऊपर नहीं जाता जल्दी, तो मार्केट में पूरी पूरी संभावना है कि बीटीसी जो है वो वापस से 60,000 की रेंज में आएगा। बट अगेन ये सारे प्रिडिक्शंस हैं, कौन सा किसका प्रेडिक्शन सच होता है, मार्केट किसकी बात सुनती है, ये देखने की बात होगी। ठीक है, तपसदास जी, आपका क्या चल रहा है? आपको क्या लगता है बीटीसी कहां तक गिरेगा, या आप गिर चुका है यहां से ऊपर ही जाएगा, क्या लगता है आपको? ऊपर ही जाएगा? अच्छा, यहाँ से नीचे नहीं जाएगा मतलब आपको लगता है? जितना नीचे जाना था जा चुका है। आपके ऊपर जाते ही बोलने से तुरंत नीचे आया है अभी। ये देखो आप, ये देखो, आपके ऊपर जाता है बोलते ही वो नीचे आया है पहले तो, है ना? 68,000 के नीचे आ गया, बाय द वे। और खैर इतना वोलेटाइल है ना ये बीटीसी, तो क्या ही बोले। कि मेरे को याद है अभी थोड़े दिन पहले मैं लाइव पे ही था, और मेरे लाइव पे रहते रहते ये 70,000 71,000 को टच करने वाला था, और एकदम से ये इवेंचुअली फिर 69,000 पे आया लाइव में रहते रहते, मतलब 15 मिनट 10 मिनट के स्पैन में। इतना इसने इतना तेजी से रिस्पॉन्ड करा है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही एक ना ऐसा कॉइन है, इसमें ट्रेड बताना बहुत डिफिकल्ट होता है भाई, इतनी वोलेटाइल है मार्केट। अब प्रिडिक्शन ये है कि अगर 70,000 जल्दी टच नहीं करेगा तो चांसेस बहुत हाई हैं कि ये 60,000 की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देगा दोबारा। तो भाई इट्स मतलब सेलर्स डोमिनेटेड मार्केट है इस वक्त। वी आर ऑल जस्ट वेटिंग एंड होपिंग टू सी दैट बीटीसी इवेंचुअली शोज सम साइंस ऑफ। पहले तो कह रहे थे थोड़े दिन पहले लेवरेज हट रहा है मार्केट से, है ना? एक तो खैर नंबर ऑफ फैक्टर्स भी है बीटीसी के साथ, है ना? अ, ऐसा नहीं है कि एक फैक्टर की वजह से प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है, जियोपॉलिटिकल रीजंस हैं, है ना?
वहाँ पर हमारे सर डोनाल्ड ट्रम्प बैठे हुए हैं, वो इतने वाइल्ड स्टेटमेंट्स दे देते हैं, कभी ईयू की ऐसी तैसी मार देते हैं, कभी ग्रीनलैंड पे कब्जा करने का ना मंसूबा बता देते हैं, कभी इधर वेनेजुएला पे एयर स्ट्राइक कर देते हैं, कभी ईरान की तरफ कुछ है ना शिप छोड़ देते हैं। तो वो इतने वोलेटाइल मार्केट को और ज़्यादा वोलेटाइल बनाने का काम करते हैं, आग में घी डालने का काम जिसे कहते हैं ना, वो करते हैं वो। इसकी वजह से प्रेडिक्शन करना क्रिप्टो की दुनिया में बहुत डिफिकल्ट है, और इसलिए हम इसी के साथ मेरी कॉफ़ी की समाप्ति हुई। मीनवाइल एक दो ट्रेड्स और करते हैं। कुछ और कॉइन्स में कुछ और परसेंटेज मूवमेंट की तलाश में और हम निकले हैं, देखते हैं क्या चेंज और मार्केट में आया है, क्या चेंज पे हम रिस्क कर सकते हैं थोड़ा। SPX ही एक ऐसा कॉइन है जिसमें सबसे ज्यादा मूवमेंट देखने को मिली है, 12% ऑलमोस्ट। ये टेस्ला, इट्स लुकिंग लाइक इट्स गोइंग अबव 414 एज वेल। GTO USDT पे आई थिंक वी कैन गो शॉर्ट। 0.3109।
311 हो गया 311 8 311 अरे यार गलती हो गई 0.3142 3142 तक अब आएगा या नहीं देखना पड़ेगा हमें। नहीं लग रहा है मुझे आएगा। आई थिंक वी मिस द बस हियर। 3142 तक तो आता है। 3167 3167 ऑर्डर ओपन ही नहीं हुआ है। I'll have to cancel this and then make 0.33175. No. 316. Okay, position open. I welcome ABEFE underscore FC from Nigeria. You're new here. Since you are new, what do you want to know? Have you made your first deposit yet? Have you made your first deposit yet? ABEFE underscore FC. Have you made your first deposit yet on zbit.com? If not, tap the deposit option below me. It's just below me, below my uh, live stream window. You can go ahead and tap on it and make a deposit.
first deposit on zbit.com. A buffet, you can go ahead and make your first deposit on zbit.com. Tap on the below deposit option. Now I look to monitor my trades on the zbit.com app. You also can do that, provided you've made a trade right in the first place. I do have a loss to show because looks like JTO USDT is on its way up. I entered at 0.3162. It's currently at 3202. I expect it to fall down further because that would help my cause. And that is because it has shown a the lowest it has gone to is 0.3022. All right, and the highest it has gone to is 0.3231. Right. Right. I'll wait for a couple of minutes because I expect it to fall down further. Welcome user 3821332 to zbit.com. If you are a new user, if you've not made most of the deposit offer, please listen to me and go ahead, make a deposit then. I can give you from my side 20,000 Pepe or 20,000 Shiba Inu absolutely free of cost. When I say free of cost, it actually means absolutely free of cost. All you have to do is make a deposit of three or more dollars, not into my account, not into any other one, any other account, into your own Zbit account. Three or more dollars you deposit and take away 20,000 Pepe or 20,000 Shiba Inu absolutely free of cost. Now, काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं, आई वेलकम यूज़र 998661। काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं और डिपॉजिट ऑफर लेना भूल जाते हैं, मिस कर देते हैं, सुनते नहीं हैं। पर आपको मैं बता रहा हूँ, आप यूज़ कर सकते हो। डिपॉजिट आप वैसे भी करोगे, आपको साथ में कुछ भी नहीं मिलेगा। आप डिपॉजिट ऑफर यूज़ करोगे तो आपको मेरे तरफ से 20,000 पेपे या 20,000 शिबा इनू इनमें से एक बिल्कुल फ्री मिलेगा। कुछ नहीं करना, डिपॉजिट करो। जब डिपॉजिट हो जाए मुझे बता दो, यूज़र आईडी मुझे दे दो, मैं आपको 20,000 पेपे या 20,000 शिबा इनू आपके अकाउंट में तुरंत डालूंगा। मेरी सपोर्ट टीम डालेगी और आप उसको यूटिलाइज करके अपनी क्रिप्टो करेंसी की जर्नी को शुरू कर सकते हैं। लेकिन प्रोवाइडेड डिपॉजिट ऑप्शन जो है वो मेरे ठीक नीचे है, उसी को टैप करना है। मेरी लाइव स्ट्रीम पे रहते हैं तो आपको उसी डिपॉजिट ऑप्शन पे टैप करना है और इस ऑफर को यूटिलाइज करना है। ठीक है, इस पे लगाए हुए पैसे इसलिए देख रहा हूँ जेटीओ को, थोड़ा इसमें पीएनएल अभी जो है वो मेरा नेगेटिव की तरफ जा रहा है। आई वेंट शॉर्ट, it's actually on a bullish run, but I still expect it to fall down in the next few minutes. So I'll wait and I'll keep tracking it. Meanwhile, I'll also take a short break. When I come back, I am into the last hour of my live streaming session. If you are having any doubts, queries, I'll look to answer that regarding today's topic, जो कि है XRP। XRP वो कॉइन है जिसको हमने आज ढंग से निचोड़ के देखा है, ओवरव्यू दिया, बैकग्राउंड बताया, XRP क्या करता है, क्या उसका यूज केस है, क्या नहीं है, क्या प्रोजेक्शंस हैं, क्या ब्रेकआउट फेज होगा, कब होगा, कैसे होगा, कितना होगा, कब होगा, ज्यादा होगा, कम होगा, ये सब बताया है। अब हम थोड़ी देर में आएंगे तो ट्रेड्स करेंगे और वेट कर रहा हूँ ये गिरना स्टार्ट हो, तब यहाँ पर प्रॉफिट रिफ्लेक्ट होना भी स्टार्ट होगा। I'll wait and I'll be back in the next few minutes. Till then, stay tuned.
Welcome back to the live stream. I am constantly following this JTO surge that has come about in the last couple of minutes. I should have actually gone the other way around, that is bullish, but I went short. I expected that it'll fall further, and it has actually gone on till the 3280 mark now. My entry price was 3186. I was expecting it to go downwards from there. That hasn't happened, but I'll still keep a hold of this trade, make another trade somewhere else, and I don't know, somehow I've never had good luck whenever I have tried trading with JTO. This coin has never given me the, I don't know if it might be just a coincidence, but it is what it is. And okay, by the way, there has been a good steep fall in the price of SPX as well. 0.3572. फोर तक चला गया है, अभी वेट करेंगे 9 इसमें बढ़ता हुआ। अरे रे 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 ऊपर नहीं हुआ 3544 पे, बल्कि मैसिव फॉल हो रहा है। आई शुड हैव, अब ये नहीं जाएगा यहाँ तक। So volatile is this market. I can't seem to get enough of the volatility that is here. जो कॉइन ने जितना प्रॉफिट करवाया था, उसी कॉइन पे अब शॉर्ट जा रहा हूं। पहले बुलिश था, लॉन्ग गया था, बट these red candles are dominating now. It is again a very sellers oriented market, sellers dominating market. I welcome user 791923 to the live stream, hoping that you are keeping a close eye on what is happening in the world of cryptocurrency. Today the topic has been that of XRP in particular. That is the coin that we have looked at throughout the course of this live session. I've given you overview of it. I have given you a short review of where it stands, and I've also given you a projection of where it could be in the next coming few months. Maybe probably by the end of 2026 you might see XRP going to the 2.80 or $3 mark as well. But that is just based on my gut feeling. We'll have to obviously look at how it is doing in the next couple of months or next couple of weeks.
So XRP also has fallen a couple of points down because it was at 1.7, 1.8 in the last couple of minutes. SPX पे मैंने ट्रेड सही नहीं करा है, मुझे फीलिंग आ रही है क्योंकि I should have been. It is showing some signs of resurgence. मेरा एंट्री प्राइस 0.3520 है. क्रॉस थोड़ा ज़्यादा है दोनों पे ही, तभी ये इतना दिख रहा है. No coin is showing that much percentage change, if you ask me, apart from this SPX. User 791923 and user 447088, welcome to the live stream. I hope you have been following all the coins and how they are performing today in the market, especially SPX, because SPX has shown a good percentage change in the market today, and we have looked to cash in on it.
Finally, JTO is looking like it's showing signs of uh, a change. BTC is actually showing signs of a fall. So I hope that you all are invested in. I look to make a trade on BTC in the next couple of minutes. I expect it to go downwards from here. I expect it to go towards the 65,000 mark as well. I don't know if you'll believe my thinking here, but I still feel like unless it touches the 70,000 and breaks 70,000 mark and breaks that resistance, it goes past 70,000. uh, I don't think there is any kind of respite and any kind of resurgence that you will see from BTC. But that doesn't look like it's happening. It's looking more and more like it will head towards a steeper fall and towards the 65,000 mark. Now, some of you might agree, might not agree with my stance, but I still feel it will fall further. So then I'll make a trade. I'll close this SPX trade. I have had a small loss. That's okay. 67 742 is the price. I'll go I'll short from here. Short from here. 67 750. Now, the only problem that I have is with JTO USDT. As I come towards the close of my live session, it's just about 30 minutes more. I look to go. I went short, but the market has instead gone upwards. But once BTC starts falling, I expect that other coins will also follow that trend. JTO is giving me a massive loss of $96, and therefore it is not a good decision. I can't close this trade out either. I look out for a few more minutes, and then look at this trade, and hopefully there will be something good here. I don't have a lot of money right now, but I would have put it in on Ethereum and BTC falling. I've obviously been short on JTO USDT as well, but looks like BTC has started falling as well.
Meanwhile, the JTO PNL is not looking good at all. As and how BTC is falling, JTO is showing huge losses for me. However, I'll still wait and see the change it has had to make. I hope that the balance, the loss is minimized, and I'll wait for that to happen. बीटीसी में प्रॉफिट है बट जेटीयू में नुकसान हो रहा है, पर मैं वेट करूंगा. आई होप दैट दिस नुकसान, दिस लॉस कैन बी मिनिमाइज्ड अ लिटिल. Anyway, if you've not joined my Telegram group, please do make sure that you join it, because I do share live signals there. I do share the latest updates regarding any update on the app, any latest news that is, speaking for itself, any big news, any major updates, any big statements for any big stakeholders, the top players in the market. You can get faster, smoother services from my side, quicker withdrawals, and quicker, support as well. So do make sure to join it. As I see that BTC looks like it will come down towards the 67,000 mark. I wish I could make more trades here, but JTO has meant that the loss in JTO for me has meant that I can't really do that. Obviously, I do have a $20 profit in BTC, which is building on fast, and the PNL when it comes to JTU is getting towards a better, uh, a lesser loss. I look if I have some money in my spot trading around. No, I don't. See, this is the fall that it has had. BTC in the last few minutes, 5 minutes or so, 1, 2, 3, 4, 5 minutes, and looks like it's going to fall even sharply from the 67 800s towards the 66 900s mark. It is heading towards. Quite frankly, welcome Nori Boro. BTC is going through a sharper fall as I predicted, and you can make a prediction here, future prediction here. I feel like it will go. Yeah, I feel like you can put some money on BTC falling towards the 65,000 mark in the next couple of hours. Uh, Provided the fact that it could have gone towards the 70,000 mark, uh, that has not happened. I feel like it will go towards the 64,000, 66,000, 65,000 mark. So you can bet short on BTC in my view. Now, don't you take an entry now, and I think you can go short on BTC. I feel like it'll go towards the 65,000 mark in the next few hours. यूजर 999966, वेलकम टू द लाइव स्ट्रीम भाई, बहुत बहुत स्वागत है. बीटीसी में क्रैश देखने को मिल रहा है इसी दौरान, 5-7 मिनट में ये क्रैश आया है. 67 900 के आसपास था, 800 के आसपास था, वहां से अराउंड 67 100 पे भी चला गया था, 67,000 में चला गया था. 67,000 है ना, लोएस्ट आप देख सकते हो लास्ट 15 मिनट में कहाँ 67,037 तक जा चुका है. मुझे लगता है और फॉल आएगा. मेरे हिसाब से फ्रूटफुल बेट यही होगी कि आप नीचे जाएं.
ओपन शॉट, ओपन शॉट। ओपन शॉट। I am constantly monitoring my PNL as well on zbit.com. Now, if you are joined on zbit.com and if you are new here, you've not made a deposit, तो मेरी तरफ से डिपॉजिट ऑफर चल रहा है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। क्या चल रहा है डिपॉजिट ऑफर? शिबा इनू कॉइन्स 20,000 मिल सकते हैं बिल्कुल फ्री में, और 20,000 पेपे कॉइन भी मिल सकता है बिल्कुल फ्री में। कुछ नहीं करना, बस $3 का डिपॉजिट या उससे ज्यादा का डिपॉजिट करना है। आपके पहले डिपॉजिट पे मैं अपनी तरफ से आपको दूंगा 20,000 पेपे या 20,000 शिबा इनू। डिपॉजिट का ऑप्शन मेरे नीचे ही है, उसी को टैप करना है, और किसी को टैप नहीं करना, उसी को टैप करना है, और आप मेरी तरफ से ले जाइए 20,000 शिबा इनू, 20,000 पेपे बिल्कुल फ्री। पहले टाइम डिपॉजिटर्स के लिए है, फर्स्ट टाइम डिपॉजिट जो लोग कर रहे हैं उन्हीं के लिए, और किसी के लिए नहीं है, ठीक है। तो भाई करो, और अपनी क्रिप्टो जर्नी की शुरुआत zbit.com पे एक अच्छे नोट पे आप कर सकते हैं। मेरा लाइव सेशन एक एंड की तरफ आ रहा है, लास्ट के 10-15 मिनट ही बाकी हैं। आप लोगों को जो सवाल पूछने हैं आज के टॉपिक के बारे में आप पूछ सकते हो, नहीं पूछने तो आपको कोई चीज़ डिस्कस करनी है वो आप कर सकते हो। आपको कोई यू नो ट्रेड, मैंने खैर आपको काफ़ी सारे बता दिए हैं। कुछ भी आपको जानना है, कुछ भी आपको क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, डिपॉजिट में दिक्कत आ रही है, विड्रॉल में दिक्कत आ रही है, कोई ऐप में फंक्शन समझ नहीं आ रहा है, तो वो आप पूछ सकते हो। मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैनात हूँ, बैठा हूँ, रेडी हूँ, बताऊंगा सब कुछ। हेलो, हेलो सर, नोरी बोलो हेलो। हेलो 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 नोरी बोलो। अच्छा, ये मतलब नहीं है कि मैं यहाँ से लाइव पे चला जाऊंगा तो ट्रेड्स का ध्यान नहीं रखूंगा। ट्रेड्स का ध्यान पूरा रखूंगा, और फॉलो भी करता रहूंगा ऑन माय ऐप एज वेल। सेल में एंट्री लिया है, हाँ शॉर्ट ही जाना था। वेरी गुड। क्या कितने प्राइस पे लिया है? वेट जरूर करना, पेशेंस का गेम है, बौखला मत जाना। रिलैक्स। मैंने 67,745 पे एंट्री ली है। हाँ ठीक है, आपके आने के बाद से मार्केट बढ़ी है वैसे, बट वेट करो। मैंने 67,745 पे एंट्री ली है, $13 का प्रॉफिट है मेरा, आप यहाँ देख सकते हो। ये देखो, बस ये जेटीओ वाला एक ट्रेड जो है ना, ये थोड़ा गलत हुआ है, लेकिन अगर बीटीसी का प्राइस जो है घटता चला जाएगा तो ये भी कवर हो जाएगा मेरा लॉस। क्रॉस कितना लगाया है? नूरी बोरो क्रॉस लेवरेज कितना लिया है? लेवरेज, लेवरेज। यार एस एल टी पी मैं आपको क्या बताऊं यहाँ पे अभी। बीटीसी के मामले में आपको थोड़ा सा ना वेरी रहना पड़ता है। थोड़ा सा आप मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं एस एल टी पी अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि अ,
आप चलो कर लो आप एसएल। 67,900, 68,000 ऐसे लगा सकते हो आप मेरे हिसाब से। एसएल शॉर्ट जाने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे तो नहीं नज़र आ रहा है कि ये मेरे को ऐसा लगता है, मैं साफ सीधी बात बता रहा हूँ कि अगर 70,000 हिट नहीं करेगा ना ये जल्दी से जल्दी, तो ये नीचे आने की संभावना बड़ी रहेगी तब तक। अब ये रिस्की गेम तो है थोड़ा सा, स्पेशली इट इज द केस विद BTC, it normally happens. So let's wait and see. You can set somewhere around TP of sorry an SL of 67, you know, 800, 900 you can set, and TP I think you can set around uh, 66, 200, 300 I think. Just wait and then सी 67 243 पे है आपका, 67 276 है ना एंट्री प्राइस। देखो भाई, इतनी बात तो आप मानोगे कि इट इज अ सेलर्स डोमिनेटेड मार्केट राइट नाउ, एंड आई डोंट सी BTC क्रॉसिंग दैट 70,000 mark anytime soon. So the only way direction for me at the moment looks downwards, and I'm not being bearish or anything. I'm just saying यही लग रहा है, नजर आ रहा है, समझ आ रहा है ना? ये तो आपको मानना ही पड़ेगा। 797079055 वेलकम टू द लाइव स्ट्रीम। JTO वाला ट्रेड एक गलत हो गया यार, JTO USDT, इस पे भी इसलिए मैं चाह रहा हूँ BTC और गिरे, तभी ये लॉस भी कवर हो जाएगा। और गिर भी रहा है, ऐसी बात नहीं है। मैं तो और ज्यादा शॉर्ट पे पैसे लगाता अगर JTO का मेरा लॉस ना हो रहा होता ना, मैं बिटकॉइन पे और जाता। बट JTO देखो आप, JTO ने ही सारी ऐसी तैसी कराई हुई है मेरी। ये देखो, मेरी एंट्री प्राइस यहाँ पर 3186 है ना? और यहाँ से मैंने सोचा था 3186 से नहीं नीचे जाएगा, ये 3263 तक चला गया है। तो ठीक है, कुछ नहीं होता, वेट करेंगे। इथेरियम को भी देख लेता हूँ। पहले तो यार JTO का लॉस कवर हो यार, ये इम्पोर्टेंट है। भाई 7-8 मिनट ही रह गए मेरे लाइव पे, तो आपको कोई सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हो। जो लोग यूट्यूब पे बने हैं वो भी पूछ सकते हैं, और जो लोग zbet.com लाइव स्ट्रीम पे जुड़े हैं वो भी पूछ सकते हैं। जरूर पूछिए, आई विल लुक टू आंसर इट, आई विल लुक टू सॉल्व ऑल योर क्वेरीज जो भी है भाई। आज हमने XRP के बारे में बात करी, आज हमने न्यूज़ देखी थोड़ी बहुत क्या चल रही है XRP रिलेटेड, फ्यूचर प्रिडिक्शन देखे, ओवरव्यू दिया। XRP क्यों बनाया गया था, फास्टर चीपर ट्रांजैक्शंस के लिए बेसिकली, क्या अभी स्टेटस है XRP का, क्या उसका फ्यूचर नज़र आ रहा है, ये सारी चीज़ें हमने आज डिस्कस करी हैं। अच्छा, आज का जो दिन है दैट इज वेंसडे,
आई विल बी हियर टुमारो एज वेल एट वेरी मच द सेम टाइम। 1 से 5 बजे तक मैं रहूँगा और आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं वो आंसर करूँगा, बट एक नए टॉपिक के साथ आऊँगा। नया टॉपिक क्या होगा, आपके कोई सजेशंस हैं वो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर सकते हैं, अगर आपने ज्वाइन करा हुआ है तो। ज्वाइन नहीं करा हुआ है तो कर लो, ज्वाइन करने के लिए लिंक जो है वो नीचे ही है, 3 डॉट्स पे आप क्लिक करेंगे आपको टेलीग्राम लिंक मेरी मिल जाएगी। एंड्रॉयड यूजर्स को, iOS यूजर्स आप सर्च कर सकते हैं जीबिट लाइव विद करण, यू विल फाइंड माय लिंक, टेलीग्राम लिंक, you can find my telegram page, I'm sorry, and please keep tracking btc, please keep tracking इथीरियम, अदर ऑल्ट कॉइन्स एज वेल, ध्यान रखना मार्केट पे क्या चल रहा है। और लास्टली कीप डिपॉजिटिंग ओनली ऑन zbit.com because it is one of the most safest, secure, transparent crypto exchange platforms for all of you people. And you can do spot trading, futures trading on zbit.com. If you've not heard of the deposit offer, you can deposit as well. फाइनली जेटीओ का लॉस कवर होता दिखाई दे रहा है भाई। तो जिसे कहते हैं ना भाई, पेशेंस इज द की, वो दिखा है मुझे इस जेटीओ के ट्रेड में। आप देखो -2 पे आ गया मेरा लॉस, जो 98 पे जा चुका था, प्रॉफिट में आ गया बल्कि देखो, क्योंकि बीटीसी प्रॉफिट में है। अभी भी जेटीओ थोड़ा लॉस दे रहा है, लेकिन आई विल वेट, ये पॉजिटिव में भी दिखेगा मुझे अभी थोड़ी देर में। ये देखो भाई, जेटीओ में देखो आप, ये देखो आप, ये देखो, मेरा एंट्री प्राइस 0.3186 था, 3196 पे आ गया है ये अब। ठीक है यार, ये लॉस ले लेते हैं, छोड़ो यार, ले लिया।
On that note, it's time for me to say goodbye to you. It's been an absolute pleasure bringing this topic to you, having discussed this in detail. XRP को हमने आज देखा, one particular coin we have looked at. आगे चल के हम और coins को भी देखेंगे. I welcome user 820463 to the live stream. We discussed about XRP today. That was the coin in focus today, cryptocurrency in focus. Tomorrow we'll have another coin that we'll discuss, maybe, or some other topic. I don't know. I'll be finalizing and sharing the topic on my Telegram group. If you've not joined it, please join it. And if you've not made a deposit today, then kindly go ahead and make one as well. The deposit option is right below me. You can go ahead and do that. Keep depositing, keep investing, keep future trading on zbit.com. It is one of the most secure, most safest, and most transparent apps in the market. Happy investing, happy trading, and it's time for me to head off. I hope that you will be here tomorrow as well when I come back with a newer topic. So goodbye from my side for today. I'll be seeing you all tomorrow, hopefully at the very same time. All of you will be here. Goodbye and take care.